Hello, everyone. Good afternoon. Good afternoon, Altamash. Thank you, sir. So I can see many of our speakers have also joined now, and participants are also joining. So we'll be shortly starting within few minutes now, couple of minutes only. Hello, sir. Welcome. So I can see now all our speakers have also joined. So now we can begin the session. Afrin, if all the speakers have joined now. All of them are here. Okay. Sure, we can begin the session now. Yes. Yeah. So hello and good afternoon, all of you. I'm Altamash Khan. I'm program coordinator. We can begin the session. Afrin, just a second. All the speakers have joined. Sorry, there was some echo. So I'm Altamash Khan. I'm program coordinator for collaborative advocacy vertical at Sphere India. I warmly welcome you all on behalf of Sphere India, World Vision India, and UNICEF India for this very important session of Interfaith Humanitarian Alliance. All the keynote speakers, the participants, and our eminent set of panelists who have come from different organizations of the state of Uttar Pradesh. For our participants who are joining us for the first time, I would like to quickly take you through Sphere India. It is an organization, it is a national coalition of humanitarian development and resilience actors in India. It is a strategic outreach of 155 full members that include key nodal organizations from United Nations, international NGOs, national NGOs, CSR, academic institutions, sector networks, expert individuals, and state intelligence groups and networks. The local is evolving with 805 associate members as Sphere India locally empowered organizations network, as well as 18,000, 1,80,000 community volunteers, that is CDRF, Community Disaster Response Force, mapped for varied capacities all over India. The Sphere India facilitates multi-sector coordination, knowledge and capacity sharing, and collaborative advocacy for enhancing accountability to the affected and at-risk population.
I'd also like to take you all through this IFHA initiative, that is Interfaith Humanitarian Alliance. We all know the world is dealing with emergencies and disasters frequently. Preventing religion-based discrimination and following the values of peace and harmony is the need of our. As influencers, faith leaders have a responsibility to highlight the ways forward for the people to deal with emergencies and associated behavioral issues. Faith leaders play a critical role in spreading awareness about facts to help minimize the fear and anxiety among people. Such steps would not only ease the struggle of the survivors with the post-pandemic behavioral issues, but would also deal with the infodemic of misinformation and rumor that is playing a crucial role in creating stigma and racism. Understanding the crisis from a humanitarian perspective is a collective responsibility, and faith-based leaders have always been playing a very critical role in spreading awareness on credible information to help minimize fear and anxiety and help mitigate disaster. Considering all of these things, especially during a crisis, we look to our leaders, especially faith leaders, to build preparedness and strengthening community resilience through credible information sharing and humanitarian action. That said, Fair India past 1.5 different states of India, and our faith leaders, they are trying to dialogue about COVID response and what work they have done, and also to spread messages on COVID appropriate behavior, gender violence, child enforced early marriage, and so on. We are doing these sessions in collaboration with UNICEF India and World Vision India. So now, we would now like to begin the session with the opening remarks from our World Vision India, Mr. Sandeep Singh. Mr. Sandeep, I'd request you to kindly share some of your opening remarks before moderating the session. Thank you, Altamash. Thank you for this opportunity. Just a quick introduction, brief introduction to our moderator for today, that is Mr. Sandeep Singh. He is the North Zone Faith and Development Manager with World Vision India. He is a professional. He has a professional experience of 16 years with World Vision as humanitarian services in India. He has done his PhD in church management. I request participants to kindly mute themselves. Friend, can you please check? Okay, thank you. So Mr. Sandeep has done his PhD in church management and is also an MBA graduate. He's presently working as manager faith and development and is based in Lucknow. So I'd now request Mr. Sandeep to kindly share his opening remarks as well as moderate the session for today. Thank you. Over to you, Mr. Sandeep. Thank you, Altamash. Thank you for this opportunity. And since World Vision is also working in the grassroots of various parts of India, and World Vision is basically focusing on children. Children are vulnerable to abuse, exploitation, neglect, and all forms of violence. Children who live in poverty and hunger lack basic rights and are susceptible to ill health, lack of protection, and poor learning outcomes. Therefore, children need to be empowered to stay protected, enjoy good health, and to be educated for life. Child health, protection, and education are multidimensional. Faith plays a major role in the culture, social behavior, and practice, which in turn molds their belief system. Most of the myths and misconceptions that are existing in the community intervene into the belief system of people. Sorry for this. So most of the myths and misconceptions that are existing in the community intervene into
intervene into the belief system of the people's faith and religious practice. People in India are usually very religious, and their belief system and faith tradition influence their practice. Faith tradition also upholds values that are life affirming and contribute to well-being of children in families and communities. While promoting development, it is present to address the root cause of the poverty that are deeply entrenched in the belief systems of the community that impede development gains. Therefore, in order to ensure child well-being, engaging and collaborating with faith leaders and faith community is one of the best ways to reinforce values in the communities that are life-affirming. This approach will lay emphasis on the empowering the faith leaders, community leaders, and youth from various faith backgrounds to create an enabling environment for children and families and communities to promote good health, education, and protect children from abuse, exploitation, and neglect on all forms of violence. And World Vision is also working in these areas in various parts of India, looking addressing the child well-being issues along with the faith leaders. And faith leaders have a very important role to play in the community because in the community, the faith leaders has a say. And when a faith leader says something in the community listens to them. So it is very important that we all should engage faith leaders in whatever activities we do, so that we have a greater impact in the community. So thank you, Altamash. This was from my side. Thank you. Thank you, sir. Now we also have with us Ms. Chandra from UNICEF. Ma'am, are you there? Yes, I'm here. Okay. So I'd request ma'am to kindly share some of his keynote address. She is the program manager, risk and resilience with UNICEF Uttar Pradesh office. So over to you, ma'am. Thank you. So will the preferred language be English or Hindi or a mix? It can be both, ma'am. Both. Okay. All right. So thank you and welcome to all the participants. And it's a privilege to be interacting with all the esteemed participants in this this interaction that is happening today. So I'll just share a small short presentation on the role of faith-based organizations in humanitarian action. So just give me a minute. Just let me share. Is it visible? Yes, yes, ma'am. Yes. So we are looking at the role of faith-based organizations in humanitarian action. And when we talk about humanitarian action, it primarily means the emergencies that we are facing, and emergencies and especially the disasters. And because of climate change, which is quite obvious to everyone today, that the intensity, frequency, and the magnitude of these disasters is definitely increasing. अगर देखा है तो इस साल भी बहुत ठंड पड़ी, स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्पेशली इफ आई कैन टॉक अबाउट यूपी. तो ठंडा काफी था और सडनली गर्मी बहुत हो गई. देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज. तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जिसके बारे में हम बात करते हैं वो काफी अब एविडेंट हो रहा है और इसके कारण बहुत सारी इमरजेंसीज अराइज करती हैं. तो हम लोग जब फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का रोल देख रहे हैं तो हम लोग ये इस एंगल से देख रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के डिफरेंट फेजेस में, इन द डिफरेंट फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हाट कैन बी द रोल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस. As we are all aware, there are 4 major phases of disaster management. Preparation, that is preparedness. Then you have initially we can have mitigation, then preparedness, then response and recovery. In चारों pillars में फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है. बट जो इस प्रेजेंटेशन में जहां फोकस है हमारा वो 3 पिलर्स पे है, प्रेपरेशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी पे, एंड फ्रॉम एन एंगल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. तो जब हम प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं, व्हेन वी स्पीक अबाउट प्रिपेयर्डनेस, व्हाट इज इट दैट द फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज जैसे पहले बताया जा चुका है दैट यू आर वेरी वेल कनेक्टेड विद कम्युनिटीज. जब आप कुछ कम्युनिटीज को बताते हैं तो आपकी बात को बहुत अच्छे से सुना जाता है. And then you have this
effect of harmonizing the communities and also bringing that kind of harmony that is required. So उस चीज को देखते हुए we feel that the role of faith-based organizations to begin with, first it can be an in-house activity. You can develop an inventory of your own resources in order to assess कि आपकी खुद की capacities क्या है. That can be used at the time of any disaster. And disaster जब हम कहते हैं तो different phases के disaster के जो है उसमें आपकी क्या in-house capacities है जो कि use हो सकती है, चाहे वो preparedness है, response है या फिर recovery है. इसके लिए एक छोटी सी ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट भी आप इन हाउस कर सकते हैं, जिससे कि ये पता चल सकता है कि कैपेसिटीज की गैप्स क्या है और उस गैप्स को कैपेसिटीज को बिल्ड करने के लिए, उस गैप्स को एड्रेस करने के लिए किस तरह का सपोर्ट आपको चाहिए किन ऑर्गेनाइजेशन से. एक तरह से वो मैप हो जाने से फिर वो जो सपोर्ट है ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर यूएन बॉडीज है, if it is feasible then they can provide that kind of support to the faith based organizations. One major aspect of any preparedness for emergencies or disasters or hazards is a hazard risk and vulnerability analysis. Communities में एक HRVA करना बहुत जरूरी है. कौन से वो hazards हैं जो community prone है, वो risk क्या है उस communities के लिए, and फिर vulnerabilities क्या है, और फिर साथ ही capacities भी analyze की जाती है communities की. तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये सपोर्ट कर सकते हैं डेटा कलेक्शन में फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉटस्पॉट्स एंड मोस्ट वनरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. फिर जो अनटैप्ड कम्युनिटी रिसोर्सेज है, इसको आइडेंटिफाई करने में एक बड़ा रोल प्ले हो सकता है फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का. एंड देन हम लोग एक बेटर तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं, बिकॉज कम्युनिटी के पास ही खुद इनफ रिसोर्सेज हो सकते हैं जिसके लिए किसी भी आपदा को फेस करने के लिए एक तरह का प्लान बनाया जा सकता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. सो फिर देयरफॉर द नेक्स्ट पॉइंट कि जो डेवलपमेंट होता है लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स में, उसमें आपका एक बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज को तो डेफिनेटली यू कैन हेल्प इन कंट्रीब्यूटिंग थ्रू योर ओन रिसोर्सेज, बट जो कम्युनिटी की रिसोर्सेज है उसको भी मैप करके फिर इसको हम लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स में इंक्लूड कर सकते हैं. अवेयरनेस, जिसके बारे में ऑलरेडी शुरू में ही बात हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है कि आप लोग एक बड़ा रोल प्ले करते हैं अवेयरनेस जनरेशन में. तो जो इमरजेंसीज को लेके अवेयरनेस है, डूज एंड डोंट्स है कि जब कोई पर्टिकुलर आपदा है, चाहे वो लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म हुई, फ्लड है या फिर आपका हीट वेव, कोल्ड वेव, तो वो क्या चीज कम्युनिटीज को किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए. एक तो अपनी कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, और दूसरा अपनी फैमिलीज या अपने लिए जो प्रिपेयर्डनेस है वो क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए, ये आप अच्छी तरह से अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं कम्युनिटीज में. एंड जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करेंगे, जो करेक्ट एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, इस तरह से जो बहुत सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस होते हैं वो भी एक तरह से हटाए जा सकते हैं. वी कैन डिस्पेल दोज मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस. So ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, करेक्ट एंड एसेंशियल इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू डूज एंड डोंट्स. एंड देन खुद आप जो कम्युनिटीज, बिकॉज जो कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है या इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है, उसमें कम्युनिटी मेंबर्स देमसेल्व्स एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, बट आपका रोल ये रह सकता है कि इनकरेज कर सकते हैं कम्युनिटी मेंबर्स को एक्शंस लेने के लिए, जैसे कि एक इमरजेंसी किट की प्रिपरेशन ऑलरेडी तैयार करके रखना. फ्लड फॉर एग्जाम्पल अगर है तो उस इमरजेंसी किट में क्या क्या रखना चाहिए, ये आप उन कम्युनिटी मेंबर्स की अवेयरनेस जनरेशन करके उनकी कैपेसिटीज बढ़ा सकते हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीम्स, माने कम्युनिटी या विलेज लेवल पे ही अलग अलग टीम्स आइडेंटिफाई हो सकती है जो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी आउट करे इन केस ऑफ अ डिजास्टर. चाहे वो सर्च एंड रेस्क्यू हो, इवैक्यूएशन में मदद कर सकती है, प्रिपेयर्डनेस में, रिस्पॉन्स में. एंड देन इवैक्यूएशन रूट्स एटसेट्रा कैन बी मार्क्ड आल्सो बाय द कम्युनिटी मेंबर्स देमसेल्व्स, एंड these communities can be supported by faith-based organizations in building their capacities to do the same. तो ये तो बात हुई preparedness की. Now when we move to the next step, which is response, some of the major support actions that can be provided by faith-based organizations include a joint rapid needs assessment. ये IAG interagency group वैसे carry out करती है using SPHERE guidelines,
जो कि हर कंट्री के लिए अडेप्ट किया गया है, बट देन फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस कैन आल्सो प्ले अ क्रिटिकल रोल इन दिस, क्योंकि आपका जो कनेक्शन कम्युनिटी के साथ होता है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, वेल रूटेड होता है, तो एक अच्छे से समझ आ सकेगी कि क्या एग्जैक्टली नीड्स है एज अ रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डिजास्टर। वो नीड्स क्या उभर के आ रही है किसी भी कम्युनिटी या किसी भी विलेज, ग्राम पंचायत या ब्लॉक के लिए। देन ड्यूरिंग एनी डिजास्टर कुछ प्रोटोकॉल्स इशू किए जाते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो कम्युनिटीज को इनकरेज करना, उनको मोटिवेट करना, उनको इंश्योर करना कि वो इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, एक बड़ा रोल आपका हो सकता है। देन इमरजेंसी सप्लाईज जो एक बड़ी एक्टिविटी होती है अफेक्टेड पॉपुलेशन को देने के लिए, जब भी रिलीफ आइटम्स होते हैं जो सरकार करती है, बट इसमें along with NGOs and CSOs, faith-based organizations भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं in facilitating the distribution of the emergency supplies। क्योंकि हम यूनिसेफ है, हम बेसिकली चिल्ड्रन के नीड्स को लेके काम करते हैं, वी फोकस ऑन चिल्ड्रन एंड प्लस चिल्ड्रन आर वेरी मच अफेक्टेड, वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल ग्रुप्स ड्यूरिंग एनी डिजास्टर, इंक्लूड इन एडिशन टू विमेन, एल्डरली एंड डिफरेंटली एबल्ड पीपल। बट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को सपोर्ट मिल सकती है ट्रैकिंग चिल्ड्रन ड्यूरिंग अफेक्टेड बाय डिजास्टर्स, ताकि प्रोटेक्शन दिया जा सके इन चिल्ड्रन को, सो दैट there is a limitation or there is a rather there's an overview कि कहीं चाइल्ड ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रहा, या बच्चे चाइल्ड लेबर में तो नहीं एंगेज हो गए, स्कूल ड्रॉप आउट्स कितने बढ़ गए एज अ रिजल्ट ऑफ द डिजास्टर। ट्रॉमा होने के कारण एक साइको सोशल सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है कम्युनिटीज को, और यहाँ एक बड़ा रोल हो सकता है FBOs का, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का। एंड फाइनली कम्युनिकेशन हब्स, ताकि आप एक करेक्ट एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट रिलीफ नॉर्म्स, कई बार लोगों को रिलीफ नॉर्म्स के बारे में नहीं पता होता है। इनफैक्ट हम तो ये भी चाहेंगे जो एक 1070 करके जो डिजास्टर रिलीफ कमिश्नर ऑफिस या फिर डिजास्टर हेल्पलाइन जो बनाई गई है 1070, इसकी जो पॉपुलराइजेशन है ये भी आपके थ्रू हो सकती है। एंड फिर रिलीफ नॉर्म्स के बारे में कि कभी कोई आपदा आए तो किस तरह का कॉम्पनसेशन किस चीज के लिए दिया जाता है, वो भी आपके थ्रू इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करी जा सकती है कम्युनिटीज में। और फिर जो सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स एक्सेट्रा होती हैं जिसके बारे में भी लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है, यहाँ भी एक बड़ा रोल फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का है। जब हम रिकवरी की बात करते हैं तो यहाँ फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप लोग जुड़े हुए होते हैं, तो जो रिसोर्सेज है, एडिशनल रिसोर्सेज जो जरूरत होती है रिकवरी, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उसको मोबिलाइज करने में एक रोल हो सकता है, ताकि फिलांथ्रोपिक इंडिविजुअल्स जो चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को रीच आउट करके या फिर इंडिविजुअल्स को रीच आउट करके उनको इनकरेज करके, so that they can contribute towards recovery needs of communities. कम्युनिटीज themselves, कम्युनिटीज खुद भी वॉलंटियर कर सकती है कुछ रोल प्ले करने का रिकवरी फेज के समय। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ कहीं पे किसी मेसनरी की जरूरत हुई है, और हमने ये कोविड के समय जरूर देखा था जब माइग्रेंट लेबर वापस यूपी आए, तो जैसे कि पूरे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने स्किल मैपिंग की थी, और जहां उस समय जब वो लोग घर पे थे तो फिर जहां जिन स्कूल्स में कुछ पेंटिंग या फिर मेसनरी का काम चाहिए था तो इन माइग्रेंट वर्कर्स को एंगेज किया गया था। तो उसी तरह जब भी कोई डिजास्टर है और उसके बाद रिकवरी फेज में अगर किसी तरह की रोल कम्युनिटी लेवल पे हो सकता है तो इनकरेजमेंट हो सकता है कम्युनिटी मेंबर्स टू सो दैट दे कैन वॉलंटियर। An important role that can be played is to help conduct welfare checks, so that ये एक तरह से एक तरह का मॉनिटरिंग हो सके कि स्कूल ड्रॉप आउट्स कहाँ बढ़ गए हैं और कहाँ पे हैं, जहाँ पे फिर फैमिलीज को जाके मिलके उनको इनकरेज कर सकते हैं कि बच्चों को वापस स्कूल भेजा जाए। चाइल्ड मैरिज का इशू हो सकता है, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इन सब में एक बड़ा रोल जो वेलफेयर चेक्स का होता है उसमें फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का रोल हो सकता है। एंड देन जो हम लोग लॉन्ग टर्म वनरेबिलिटीज की बात करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत सारे जो डिजास्टर्स की जो इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड या फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज आल्सो क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। एंड ये क्लाइमेट चेंज कोई नई चीज नहीं है, बट बिकॉज ऑफ
the actions of हम लोग के actions के कारण ये थोड़े faster pace में होने लगा है. तो इसके लिए जो long term vulnerabilities है या environmental degradation है, उसके लिए भी आप support कर सकते हैं ताकि community level पे एक road map भी बन सके that can then be collated at the district level and then finally at the state level, and then an operational plan can be made in order to implement the roadmap for each of these areas. So यहाँ हम लोग का जैसा हमने आपसे कहा कि this is what I think, and we as UNICEF would also like to promote this aspect, that the faith-based organizations play a critical role in disaster risk reduction and be better prepared and help the communities to be better prepared to deal with disasters. So thank you very much, and I'm open to questions or any suggestions. That's it from me for now. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much for taking us very extensively about the role and importance of faith-based organizations and leaders, especially in disaster mitigation, disaster risk reduction, and emergency management. Now, I would like to give the floor to Mr. Sandeep Singh, who will be moderating today's IFHA session, and I'd request him to kindly initiate the question answer session with the panelist for today. And for participants, there will be a special question hour round at the end of this session. So if you have any queries, you can put it into the chat box also, and or you can ask it during the question answer round. So Mr. Sandeep, over to you. Thank you. Thank you, Altamash. Thank you very much. Before we go on to the question answers session, I would like to introduce our panelist for this evening. So our first panelist is बहन B.K. Hussain, जो एक राज योग टीचर है from Om Shanti Retreat Center, and she has been practicing Raj Yoga meditation for around 19 years, and she has done MBA from NMIMS from Mumbai, and she also hosts TV programs related to spirituality, social issues, health and wellness, and youth and women. Our second distinguished panelist is Mr. Khalid Rashid Firangi. He is the chairman of Islamic Center of India. And our third distinguished panelist is Dr. Narendra Kaur. She is the founder of Ananshil Welfare Foundation. And this foundation mainly focuses on education and health. And she has completed her doctorate from American Literature, Lucknow University. And currently she has devoted her life in the services of humanity and mankind. She worked for the rights of education for children, and Dr. Narendra Kaur has been organizing various COVID vaccination centers in the city and has managed to get approximately more than 30,000 people vaccinated. The center includes the Central Bar Hall, Civil Court, Lucknow Bar Collegiate, and Shri Guru Singh Sahib, Chandranagar Gurdwara Sahib, Shri Guru Singh Sahib, Mansarovar Gurdwara Sahib, Kendriya Guru Singh Sahib, Alambagh Gurdwara Sahib, Shri Guru Singh Sahib, Ashiana Gurdwara Sahib, Indian Industries Association, Classic Montessori High School, Chandrana, and CMS Mansarovar. And I would now introduce our fourth panelist is Father Anand Matthew. He is the director of Vishwa Jyoti Communication and Prerna Kala Manch, Varanasi. He is a cultural activist and indigenous writer. He has done his post-graduation in theology from St. Albert College, Ranchi. From 1983 to 1987, he worked in Fatehpur district in UP, founding and coordinating non-formal education centers in 6 villages. Founder and manager of St. John's Hindi Intermediate School, Fatehpur, 1990, and he has worked as a formation in charge
Raj, of student of philosophy, Vishwa Jyoti Gurukul Varanasi. Currently, he is working as a director of Vishwa Jyoti Communications, Varanasi since 1994 till date, working for social and religious harmony in Varanasi and all over India, as well as working with People's Movement since 1998, and also working for environment, pollution-free cities and village, and toxic-free vegetables. He has directed almost like 50 documentary films on socio-cultural issues. He has written and directed 28 stage and street plays for value education and social awareness. He also coordinated relief works from 1999. He also received various awards. And our fifth distinguished panelist is Arvind Raj. He is an assistant professor in Guru Gobind Singh Department of Religious Studies. He has completed his MA, MPhil, PhD from University of Delhi, PG Diploma in Journalism from Indian Institute of Mass Communication, New Delhi, MA in History from IGNOU, Sector 62, Noida. He has worked as a correspondent for Navbharat Times, Hindustan, and covering all activities happening in Noida and Delhi. Currently, he is an assistant professor in GGS Department of Religious Studies in Punjab University. He also worked as an assistant professor in the Department of Buddhist Studies. So I welcome all these panelists that I have introduced, and we'll move on to the further to our round question answers round. Mr. Sandeep, Yeah. just a small request. Before beginning the session, can we request all the participants and speakers to kindly switch on their video? We'll just take a small snaps also for the documentation purpose. Yeah, thanks, Altamash. Sure. Yeah, I would request the participants also, if they are comfortable, they can please switch on their camera for a moment, just for a few minutes. Arvind, you may take the screenshot. Thank you. Yeah, Mr. Sandeep, you can continue. Thank you. Thank you, Altamash. Thanks for the photos. Thank you, all of us. Okay, now we'll move forward to the question answers session. My first question is, how can we prepare better for effective humanitarian action post emergencies and disasters while fostering positive outlook among the communities? मैं इसको हिंदी में भी अगर मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। हम समुदाय के बीच में सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए आपात स्थिति और आपदाओं के बाद प्रभावी मानवीय कार्रवाई के लिए बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं? So I would now request our panelists to throw some light on this, and I would request now Father Anand Matthew from Vishwa Jyoti Communication and Prerna Kalamach to throw some light. Namaskar, good afternoon to you all. Are you able to hear me? Yes, sir, we are very clear. Yeah, thank you for this opportunity. I thank the organizers, especially Afreen Haidar, who has been regularly in touch with me and included me in this panel. Thank you. I would like to make it clear to you that I'm not exactly faith-based leader in its strict sense. I'm a priest of the church, but I don't have a community of Christians. I'm not a leader of the Christian community. I am rather an animator of interfaith communities
I work as an activist, more as a cultural activist with my theater programs. So, but at the same time, I've been involved with disaster management and relief programs. So to the question, how can we be prepared? I think what Urvashi has been screening has helped us to understand. At the same time, I'd like to say regular contact with people of the communities, both ways. One thing, the people who are in need of the help, and also people who can help, resources, volunteers, both are very important. So people who need help, स्पेशली ये जानने के लिए कि उनकी ज़रूरतें क्या है और उन्हें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, और दूसरी चीज़ कि कहाँ से हमें आपसी सहयोग मिल सकता है, ये इसका अपडेट हमारे पास होना चाहिए, और ये प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़रूरी है, और राइट टाइम we need to get into action, and also we need also to be in touch with the civil authorities, and so that we get permission, like Corona time when it was announced all of a sudden, we found extremely difficult. The civil authorities were not helping because they were told be indoors, घर के अंदर रहो. उनको समझाना बहुत मुश्किल था, सर हम तो अब घर के अंदर रहेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है, जो भूखे कगार पर हैं, और तभी वो एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझने में बहुत समय लगा, क्योंकि वो बहुत अजीब तरह का सिचुएशन था जिससे वे लोग पहले से परिचित नहीं. So we need to be in touch with these three types of communities, regularly be in touch, and that social contact is very, very important factor. Did I answer to the question? Yeah. Thank you, Father. Thank you for your insight, and it is very important that we should be in touch with these communities and people who need help and people who can help. Also, both are important. Thank you, Father, for your insight. Now, I would request Behan BK Hussain कि वो अपने विचार को रखें. Thank you very much, and I hope that I'm audible. Yes, ma'am. Yeah, so thank you very much, and thank you for inviting me for this panel, and it's a very relevant and the need of the hour, because as religion and interfaith leaders, they can actually make a lot of changes and bring about a lot of changes in the psyche of the people. So I would just would like to begin with saying that as I'm part of the Brahma Kumaris organization for last many years, and Brahma Kumaris has been doing precisely the same thing which we've just talked about when we were looking at the presentation of the UNICEF, which is preparing what should be the response and how do we recover. The whole basis is about really bringing about the behavioral changes in the people, because it's not just the matter of faith that okay, I believe in God, or I believe I belong to a particular caste or religion or sect, but it is more about the inner empowerment. And post-COVID, we have seen that it's not just about, of course, there was lack of facilities and things which happen, and we all witnessed that, but more so even those who had the facilities, who have gone through, who've recovered, have been going through some kind of an anxiety. There is fear in the minds of people. There's a lot of apprehensions about the future.
and uh, this is innate, it's not conducive for the development of any family or any society, and especially has an impact on the children and women. So we have been organizing programs for stress management, mind management, also programs for children, reaching out to them, um, reaching out locally, as well as we organize programs online which are open for all and can be accessed. We also uh, have this concept of holistic health management, wherein we train the doctors. We have, because doctors or nurses or those who are in the paramedics who are actually taking care at any disaster are under a lot of stress. So though they have this good intention to help, but what we've experienced is that they also are under tremendous pressure. And how can they keep their minds stable and help those who are in need? So those programs also we have been carrying out for some time and for many years. And then we talked about climate change, and I'd like to mention that the Brahma Kumaris organization has been part of the climate change, and we actively use things which are sustainable, um, uh, which includes the technology of solar electricity, or whether, how do we reuse the water, and other technologies are used at our centers and retreat centers in India and across the world. I'd also like to just mention that the Brahma Kumaris is in general consultative status with the Economic and Social Council of the UN, and affiliated to the UN Department of Global Communications, and is an accredited observer organization to the UN Framework Convention on Climate Change and the UN Environment Programme, wherein we understand that climate change can be linked with the consciousness. And so these are some of the things that, of course, we've been doing, and also that we have got about 19 to 20 wings which cater to different sections of the society. For example, we have the women wing, we have the youth wing, we have agriculture wing, which caters to the farmers, we have business industry wing. That these are the different sections of the society. How can you actually use spirituality in your day-to-day life? Now, sometimes what happens is when people think about religion, it's not another path. It has to be in my life. How am I using it? How am I using it for the empowerment and strengthening my inner being? And that should be used in my practical life. So we understand that it is practical. Spirituality has to be practical. It has to be in action, wherein you have compassion, you have responsibility, you have care within you. Then there will be no need of really training anyone, because you're working from that space of peace, you're working from that space of love, and you're working from that space of purity within yourself. So we empower individuals with the Raj Yoga meditation, which is a very practical thing, can be used, can be practiced by anyone. It is knowing about yourself as the Atma, the soul, the spiritual being, the entity within this physical body, and empowering the self by the connection with the Supreme. So we have been doing it, and this is what I'd like to say for the first question that you've asked. Thank you, sister. Thank you for your insight. Thank you. Rightly, you have said that spirituality should be practical and in action. And also, you have also mentioned using the renewable sources of and organizing programs like for stress management for the community good.
Good. Thank you, sister. Thank you very much. Now, I would now request Khalid Rashid ji from Islamic Center of India, वो सामने आके अपने विचार को व्यक्त करेंगे. Mr. Khalid Rashid. First of all, I would like to extend my best wishes and congratulations to the organizers of this webinar. And the topic is really very important, and it is the need of the hour, especially in the light of the pandemic, that we, the religious leaders, should come together and guide our followers and our communities, especially in the health sector. And since this great nation, the positive thing about our nation is that nearly, you can say, 90% of the public are religious, and they want to follow, you can say, they follow whatever the religious leaders say, especially in the light of the respective religious teachings. So we have to tell our followers that along with the worship in our respective religious places, and along with whatever is written in our religious book, worship is also to serve the humanity, to look after our families, and as far as health is concerned, it is very clearly said in Islam that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has said that it is the basic religious responsibility of the parents to look after the good health of their children. So when there was lots of misconceptions regarding polio drops, we taught our followers that as far as polio drops are concerned, since the doctors and all the scientists have said that it is essential for the good health of the children, so it is the religious duty of all parents to administer polio drops to their children. So it have a very positive impact, and now nearly the polio has ended from our country. So on the basic and the general health sector also, we, the religious leaders, should include the all the various schemes, whether related to routine immunization or COVID vaccination or polio drops, or the recently started a special drive by the name of Indradhanush by the government to increase the routine immunization, since the routine immunization was not possible during the last 2 years during the pandemic. So yesterday when I gave my religious sermon during the Eid prayer, in which around 4 to 5 lakh people participate, I, apart from other religious teachings, I appeal to the people once again that that all the parents must look after the general health of their children, and whatever the schemes, whether they are by the health department of the government or UNICEF or Rotary, whatever they announce to give
routine vaccination or other vaccination which are essential for the safety of our children, we should administer it after consulting from our, you can say, family doctors. So, but we have to continuously work in this field also. And since in this webinar there are a number of important personalities who are participating, and you all know that in the Western countries and also in the Arab countries, the governments and also the parents give lots of emphasis on child health. And whereas in India, the general masses do not give any emphasis to their or attention to the good health of our children. And that's why the general health and other indexes related to health of the general children in our country are very low. And whatever the various reports which regularly are being published, especially by UNICEF, so the kind of immorality and on other general health indexes, the index of the health index of children of our country is very bad. My take is, and I think that the main emphasis or the takeaway point of this webinar should that we, the religious leaders, should, along with other religious practices and other religious teachings, in our sermon, not only on some occasion, but regularly should guide our respective communities on the in this sector also. And whatever the schemes are being started, whether they are started by the health department of the government or assembly, UNICEF or Rotary or Sapphire, we should publish it through our sermons and through our speeches. And my request to the organizers, Sapphire and UNICEF and other people, is that you people should also keep in regular touch through email, through WhatsApp, to the religious leaders, and should continuously communicate them about the various steps being taken by your organizations and by the government health department for the vaccination or routine immunization and or other schemes. So I am very thankful once again to the organizers who have given me an opportunity to say some words. And since today is the second day of Eid and lots of guests are sitting, so now I want to end my take and pray to the Almighty to help us to serve our nation and to look after the good health of our children, especially the children of our country. Thank you. थैंक यू रशीद साहब, बहुत बहुत अपने चिरती से आपने हमें समझाया कि सचमुच में हमें जब हम बात कर रहे हैं अपने कम्युनिटी के साथ, तो हम चाइल्ड वेलबींग इश्यूज जो हैं उसके ऊपर भी हम बात करें स्पिरिचुअलिटी को लेके साथ साथ। थैंक यू। और आपने बिल्कुल सही बोला, राइट, यू हैव सेड दैट वर्शिप इज सर्विंग द ह्यूमैनिटी। थैंक यू रशीद साहब, थैंक यू फॉर योर इनसाइट, एंड आई विल मूव फॉरवर्ड। आई विल नाउ रिक्वेस्ट Dr. Narendra Kaur from Untitled Welfare, she can come forward and throw some light on this. Dr. Narendra Kaur. I hope I'm audible now. Yes, I forgot to unmute myself. Okay, thank you for inviting me to this seminar. I'm very happy to speak on this topic because somehow it is very closely associated to my feelings and the way the work I've been doing in the field. I'm not a religious leader though, but I do have that empathy for the people when I saw this pandemic time, and it was very disheartening to see people, the way
People have seen death in their family. They've lost their loved ones. So, well, when we talk about preparing ourselves, okay, so how much have we prepared, or how should we prepare? I think most of the time in life, things happen unexpectedly, and it is COVID was one of the examples. We were not prepared for it. But what made us, face this pandemic? What was the core key which helped us in facing this pandemic was our behavioral aspect to this pandemic. Now, when we talk about our behavioral aspect, and also talking about the religious leaders, or if we talk about spiritualism, if we talk about humanism, if we talk about humanity, if we talk about religion, I think these are all interconnected. These are all interconnected. And when, as Brahmkumari ji, the speaker, when she said, we have to practice what we preach. I mean, what she meant was that we have to practice. So what we need to practice is what we are learning from our gurus, from our leaders. Everybody in their life have a leader, right? And a guru, sorry, not a leader, a guru. And we have to follow the speeches or the context given by them. But how far do we do it? Through religious leaders, if we talk about them, they are a kind of vocal gurus, right? What they speak to us is something from their own religious books, which has been given to us from our Prophet Muhammad, or Guru Nanak Dev Ji, or Jesus. So where do we lack, or where have we lacked, is the preaching. Is the practice, sorry, not the preaching, is the practice. Once you practice what you actually get from your gurus, or from your religious leaders, or from your parents, or from your teachers, you need to practice it. Now, what do we need to practice? We need to practice being a good human, being a good person. So when I talk about COVID, I have seen the time when I used to get calls since morning until late night. I was running, I was just making different calls to people, trying to arrange for this cylinders, oxygen cylinders, for the vaccinations and everything. But a lot of time it happened. It was a time where I think I have seen my close friends losing their parents, which was very disheartening at that time. I had no words to console them. I could not understand how to actually reach to them for help, but to my fullest, whatever I could do, I did it. So what helped me motivating myself to keep helping them every day last year? I remember in the month of April till it continued till May. It was horrible. It was a horrible time. But what continued, what helped me to keep on moving in this direction was probably the teachings which I have learned from my guru. The service to mankind, that helped me kept on moving on. Also, if we talk about spiritualism, spirituality should be within. And how does it comes from? It comes from regular practice. So when we talk about meditation, it helps us connecting with God. Also, we are forgetting the main core which helps us in connection to God, that is yoga, which our ancient yogis used to do it when at the time of meditation. So this was something which is personal. My personal experience during pandemic, when people were inside their houses, I was on the streets, I was helping people. And by God's grace, not for once, I got affected by COVID. Probably it was the daily exercises in yoga which helped me being healthy, which helped me being fit,
and which helped me in fighting this pandemic. So this is a major portion which we all are missing, which is mentioned in almost all the religious books that we talk about. God is within us. आप कहाँ भगवान ढूंढते हो? हर मंदिर मस्जिद में भगवान हमारे अंदर है. So this was a time which illuminated my insight when I said भगवान हमारे अंदर है. तो वो उस समय पे ऐसा हुआ था जब when I was into cardio, when I was into yoga, at that time I realized कि मैं अपने आप को जो सही कर रही हूँ या अपने आप को जो improve कर रही हूँ, it is the God within me which is, you know, हमारा body ही हमारी God है. अगर हम देखें इस चीज को बहुत बारीकी से देखें तो ये देखना है कि हम लोग को कोविड हुआ, उन लोगों को मैक्सिमम हुआ जिनको बहुत ही जो फ्रेजाइल थे, जो फिजिकली अनफिट थे. एक ही घर में 5 लोग हैं लेकिन 2-3 लोगों को हुआ. कहीं ना कहीं they were vulnerable to the disease. Why? Because there was something which was already there in the body. तो वो चीजें हम कैसे eradicate कर सकते हैं? Yes, most important is meditation. मेडिटेशन हम सबसे बड़ी चीज भूल जाते हैं. मेडिटेशन में अगर आप ध्यान करते हो तो आप सांस पे ध्यान देते हो, इनहेल एंड एक्सहेल. और ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि हमारा इनहेल और एक्सहेल ही हमें जिंदा रखता है. ये पोर्शन लाइफ का, ये जो हमें जिंदा रखता है, हम इस पोर्शन को भूल जाते हैं. If I tell everybody present here, if I tell you all to focus on this portion for at least half an hour, not for more than half a minute, you will be able to focus and concentrate. आपका mind भागेगा. So we are actually running around. हम भाग रहे हैं हम सब. और preparedness हमारी क्या होनी चाहिए कि हम भागे ना, हम रुकें. कोविड ने हम लोगों सबको रोका. It halted our speed. It halted our pace. It made us sit inside home, have an insight into yourself and see what is happening around and fight with it. तो हम कैसे लड़ेंगे जब हम अंदर से मजबूत नहीं होंगे? हमारी मजबूती हमारे अंदर है. तो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है. जैसे खाना बनाने में हमें हर तरह की चीजें डालनी पड़ती फ्लेवर्स के लिए, लाने के लिए. सॉल्ट हो गया एंड देन हल्दी हो गया एंड देन यू हैव दैट गरम मसाला एंड देन यू हैव दैट किचन किंग आल्सो टू ऐड. ओके, सो ऑल दीज फ्लेवर्स, when we talk about fighting the pandemic, the flavors which we need to inculcate in life is spiritualism, humanity, yoga, meditation, and of course this will help you bring out a good human being. Then follow your gurus, the most effective people, because being a teacher, being from a teaching background, I've seen youth is going haywire. हमारा यूथ इस चीज को नहीं समझता. हमारे पेरेंट्स, लाइक आई लर्न फ्रॉम माय नाना जी अबाउट spiritualism, about Guru Granth Sahib Ji. Then I learned from my mother, from my father. But if I see my younger generation, they are not learning from us. So somewhere it is declining. And everything is there in our religious books. And the religious leaders, they are the speakers of these religious books. So I request the religious leaders to be a guru, be a guide for these youth and children and help them prepare, especially at the time, because they are carriers. They will be carrying our nation forward. They will be carrying our society forward. So they need to be, metalled properly. They need to be made solid in such a way so that anything comes in their life, they are prepared for it. For example, now as we are seeing fourth wave, if we see the history of COVID, every wave had a different symptom. Again, we don't know what is going to happen next. So how are we going to prepare ourselves? Our brain, it has to be strong. And how do we strong our brain? By exercising these things. Thank you so much. Thank you, Dr. Kaur. Thank you very much for your insight. As rightly said, spirituality, religion, and society are interlinked, and faith leaders, religious peoples are the voice for our scriptures. And what is mentioned in the scriptures, faith leaders should emphasize and should pass it on to the next generation. You also said that what we are lacking is we need to practice
And what should we practice? We should practice to be a good human. We should practice to be a good person, and learn from the teachings from the scriptures, from our gurus. Thank you very much. Thank you. And last of what you said was God is in with us. Thank you. Thank you for your time. And I would move on, and I would now request Arvind Raj from the Punjab University to come forward and speak to us. Hello, I am audible. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. बहुत बहुत थैंक यू स्पेयर इंडिया को खास करके, क्योंकि उसने हमें यहाँ पर कुछ अपनी बात रखने का मौका दिया। कोई भी इमरजेंसी की जो तैयारी हम करते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मैं शुरू में इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं बेसिकली इंटरफेथ रिलीजन हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है, गुरु गोविंद सिंह डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडी, जहाँ की 8 वर्ल्ड के 8 बड़े जितने मेजर जो रिलीजन है उसको एक छत के नीचे हम लोग पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर कोई रिलीजियस धर्म गुरु नहीं है, लेकिन सब एकेडमिशियन हैं। तो हम ये बात इसलिए कह रहे थे कि जो सोसाइटी में जब हम जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि कई तरह के ये प्रॉब्लम आते हैं। मुस्लिम लीडर अपने लोगों को बताते हैं, सब सही बताते हैं, हिंदू लीडर अपने लोगों को बताते हैं, लेकिन एक इंटरफेथ डायलॉग नहीं हो पाता है, जो हमारे प्रिपरेशन में कमी हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, जो कोविड का पीरियड आया था उसमें हम नोएडा में रहे थे, वहाँ हमने देखा था किस तरह से लोग लाचार हो गए थे, और सारी कुछ हम चूंकि मीडिया पर्सनालिटी भी रहे हैं तो वो भी कवर करते रहे। हम लोगों का फर्ज, सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि हम अपने पड़ोसियों के बारे में जानकारी रखें। खास करके मेट्रोपोलिस कल्चर में हम देखते हैं कि हम अपने घर तक सीमित हो गए हैं और अपने आसपास के लोगों को भी जानकारी नहीं रखते हैं, उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं होता उनको। हम ना तो कुछ बता सकते हैं, जब जान पहचान नहीं होती है तो बता नहीं सकते हैं। कोविड को लेकर कितनी तरह की गलत धारणाएं थी, हम उनको क्लियर नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे उनसे बातचीत नहीं होती है, उनसे पहले से कुछ तैयारी नहीं होती है। तो मेरा मानना है कि अपने आसपास के लोगों के, एक कॉमन आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, रिलीजियस लीडर तो है ही, वो तो उनके साथ सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो बात बोलते हैं, उनकी बातों पर ध्यान रखते हैं, लोग ज्यादा मानते हैं, लेकिन एक कॉमन आदमी के लिए भी ये जरूरी है कि अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें, उनसे जान पहचान रखें, ताकि सुख दुख में साथ आए। क्योंकि इमरजेंसी के बाद या इमरजेंसी के दौरान जो सबसे हेल्पफुल लोग नजर आए थे वो पड़ोसी ही नजर आए थे, क्योंकि पड़ोसी नहीं साथ देते हैं, आसपास के लोग साथ नहीं देते हैं तो कुछ नहीं होता। सरकार ने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इतने चीज दे दिए, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि हम लोग आपस में नहीं कुछ कर पाए थे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए एक ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम बीच बीच में होते रहना चाहिए, जो डिफरेंट सोसाइटी कर सकते हैं या फिर और जैसे भी हो ये करना चाहिए। जब हम कोविड के दौर से गुजर रहे थे, हमने आसपास, चूंकि हम रिलीजियस स्टडीज से हैं तो हम तो इतने लोगों में खुल जाते हैं आसानी से, बल्कि वो किसी रिलीजन का हो, तो उनको मैंने अपने घर के आसपास और डिस्टेंस में जैसे हो, उनको हमने मेडिटेशन के कुछ टिप्स बताए थे कि मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन करने से आप इनर कोर आपका मजबूत होगा और आप अच्छा रहेंगे। दूसरी बात, एक प्रिपरेशन के लिए और हम करना चाहते हैं कि आजकल लोग मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिज्म को ओल्ड एज के लिए मान के बैठ गए हैं। हमारे यहाँ हम लोग काफी कोशिश कर रहे हैं कि स्पिरिचुअलिज्म को हम यूथ से जोड़े। स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं ना कि
जब सब कुछ कर लिए तब आप स्पिरिचुअल बन जाएंगे, अध्यात्म की ओर चले जाएंगे, भक्ति में लीन हो जाएंगे, ऐसा जब पूरे लाइफ खत्म हो जाती है तो ऐसा मानते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन में भी कि हम स्पिरिचुअलिज्म को, मेडिटेशन को यूथ से जोड़ें। स्पिरिचुअलिज्म को ये न देखें कि अब लाइफ के अंतिम समय को हम काटें किसी तरह से, बल्कि हम ये देखें कि स्पिरिचुअलिज्म, मेडिटेशन हमारे लाइफ में कैसे उपयोगी हो सकता है, हमारे गोल अचीव करने में कैसे उपयोगी हो सकता है। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है और हम लोग इसमें काफी काम कर रहे हैं। और एक और जो हमने कोविड के दौरान फील किया था कि जो आपको याद होगा कि किस तरह से जमाते वाले का जो चल रहा था, उसमें किस तरह से माहौल ऐसा बन गया था कि लग रहा था कि ये सारा कोविड मुसलमान ही फैला रहे हैं। इस तरह का जो मिसकंसेप्शन आता है, एक हमारे हिसाब से इसलिए आता है कि हमें किसी में इंटरफेथ डायलॉग नहीं हो रहा है। यदि इंटरफेथ डायलॉग हो तो इस तरह का मिसकंसेप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि उस दौरान क्या था, अब बाद में रिजल्ट क्या निकला। तो इसकी भी तैयारी हमें होनी चाहिए। आई थिंक, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू वेरी मच। और आपने जो कहा है सही है कि इंटरफेथ डायलॉग होना चाहिए आप ऐसे पैंडेमिक के समय पे या ऐसे आपदा के समय पे। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम आपस में बात करें और आपस में एक दूसरे के जानकारी रखें। नेबर्स, जैसे आपने कहा कि हम जो मेट्रोपोलिस कल्चर में हम अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते, तो उनके बारे में हम जानकारी रखें। एंड ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए, और खासतौर से जो यूथ है उनको स्पिरिचुअलिज्म के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच अरविंद जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आगे बढ़ूंगा अपने अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला जो प्रश्न है वो है, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू योर फॉलोअर्स टू गैदर, pray and practice faith during the post-pandemic times and prevent religious bias discrimination? मैं इसको हिंदी में भी एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा। हिंदी में इस प्रकार से है, आप अपने अनुयायियों को महामारी के बाद के समय में इकट्ठा होने, प्रार्थना करने और विश्वास का अभ्यास करने और सामाजिक कलंक और भेदभाव को रोकने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? सो अब मैं गुजारिश करूंगा फादर आनंद मैथ्यू जी से, he can come and speak on this question. Yeah, that's a very good question कि अपने लोगों से प्रार्थना करने और सभी लोगों के साथ बिना भेदभाव का व्यवहार करने के लिए किस तरह का अप्रोच लेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा अपना कोई उस तरह के अनुयायी नहीं है, लेकिन हम जहाँ कहीं जाते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में खास करके और अन्य लोगों के बीच में भी, हमारा लगातार ये प्रयास होता है और मैं बराबर ये करता हूँ। जैसे बाइबल में भी लिखा है, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है, बाइबल के मत्ती के सुसमाचार के 5वें अध्याय के 43 से लेकर 48 तक वाक्यों में लिखा है, लव योर एनिमीज। और उसमें दो प्रभु यीशु कहते हैं, तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गिक पिता पूर्ण है। Be perfect as your heavenly Father is perfect. And what is the sign of that perfection? Perfection is the largeness of heart. बड़े दिल वाले बने, किसी को अपना और किसी को पराया इस तरह ना समझे, सबको बराबर समझे। और उसके लिए प्रभु यीशु उदाहरण देते हैं कि जब स्वर्गिक पिता आसमान से बारिश बरसाते हैं तो वो भले और बुरे दोनों पर
पानी पड़ता है। जब सूरज की रोशनी पड़ती है वो धर्मी और अधर्मी सब लोगों पर पड़ता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। कौन अच्छे हैं ये चुनकर उन्हीं पर कृपा नहीं दी जाती है। सो इन द सेम वे वी आर एक्सपेक्टेड टू ट्रीट एवरीवन इक्वली पीपल। और उसके बाद प्रभु यीशु दो सवाल पूछते हैं कि यदि तुम अपने ही भाइयों को नमस्कार करोगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम अपने ही लोगों को प्रेम करोगे तो कौन सा पुरस्कार तुम्हें प्राप्त होगा? तो सबसे प्रेम करो, कोई भेदभाव ना करो। And I tell all my Christian community, if Christians are loving only Christians, then they are not Christians. It is un-Christian to love only people of one's own community. So that is with regard to the Christian community. And as I am an interfaith activist, हमेशा हम लोगों की कोशिश है, इन दिनों पिछले दिनों लगातार हम लोग विभिन्न समुदायों के बीच में आपसी संबंधों को जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान हम लोगों ने पैगामे मोहब्बत नाम से एक कार्यक्रम किया, मुशायरा वगैरह के मदद से गांव-गांव में, बनारस के घाटों पर, शहर के विभिन्न मोहल्लों में, कि लोग खास करके चुनाव के दौरान ध्रुवीकरण ना हो, there be no polarization, let there be respect for everybody and no one be carried away by the चुपड़ी चौड़ी बातें जो राजनीतिक लोग करते हैं, प्रोमिसेस देते हैं, साड़ी देते हैं, कंबल देते हैं, कपड़े देते हैं, दारू देते हैं, मुर्गा देते हैं, इसके पीछे ना जाए, but be stand on your principles and vote. After that, during the होली मिलन कार्यक्रम हम लोगों ने बहुत सारे गांवों में रखा। उद्देश्य ही था कि हम लोग सबसे प्रेम करें और किसी भी आपदा और दिक्कत में एक दूसरे का साथ दे। रोजा रमजान के पीरियड पर हम लोग लगातार रोजा इफ्तार का आयोजन कर रहे थे, सब लोग मिलकर, हिंदू क्रिश्चियन लोग मिलकर मुस्लिम्स को रोजा इफ्तार के लिए मदद कर रहे थे। अभी इन दिनों हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं ईद मिलन है, सीरीज ऑफ ईद मिलन प्रोग्राम्स, so that at the time of any emergency, किसी भी प्रकार की आपदा और आपातकालीन स्थिति में हम एक दूसरे का सहारा बने, धर्म की दीवारें हमें ना बांटे, हमें दूर ना करे और दिल के फासले कम हो जाएं, हम एक दूसरे के नजदीक आ सके, ये हमारी लगातार कोशिश है। और मैं समझता हूँ आज के दौर में जहाँ बहुत ज्यादा नफरत फैलाया जा रहा है धर्म के नाम पर, वहाँ इस चीज की बहुत बड़ी जरूरत है। Thank you, Father. Thank you for your insight, and rightly said that be perfect as your Father in heaven is perfect. जब परमेश्वर किसी पे भेदभाव नहीं करते तो हमें भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए. We should treat everybody in the same manner, in the same equality, and should love everyone as Jesus has said that to love your neighbor as thyself. Thank you for your insight. आपने ये भी कहा कि disaster के समय we should come together and come close to each other so that जो नफरत है जो आज के समय में हम देख रहे हैं वो उसको किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं, वो इसी प्रकार से कर सकते हैं जब हम एक दूसरे के करीब आएंगे. Thank you very much, Father. Thank you for your insight. And I would now request Sister BK Hussain Jisek, that she can come and speak on this question. ओम शांति. लाइक यू सेड कि किस प्रकार से हम जो लोग हैं वो किस प्रकार से जो एक डिस्क्रिमिनेशन की बात यहाँ पर आती है. आई वुड लाइक टू से कि पहली चीज जब पैंडेमिक हुआ तो देयर वाज दिस वन रियलाइजेशन दैट पैंडेमिक विल हिट एनी एंड एवरीबडी.
when a virus comes or when any disaster comes, it never discriminates that which religion you follow or what are your practices. It's one and the same for all. And the pain and the suffering which is being experienced by a human being is the same, irrespective of their religion. So this is something, one of the realizations I think which was very evident during these last 2 years. And also, it also doesn't mean what sort of a social standing you have, because even those who were very well connected or well placed did not survive in some of the way which happened. So this is one thing that this pandemic has got us in some ways closer as a community, not just for our local community, but as a world, wherein we saw that economies or countries who are so supposedly well developed and with the right sort of set of infrastructure for medical facilities, the pain, the suffering of humanity was the same. So this is one realization that world over people are having. And then comes the thing of the discrimination. So here, what we understand is, किसी भी प्रकार का discrimination start होता है body consciousness से. और अगर हम हर प्रकार के discrimination को समाप्त करना चाहते हैं, चाहे वो religious discrimination हो, चाहे वो gender based हो, language based हो, color based हो, किसी भी economic strata के आधार से हो, तो हमें सोल कॉन्शियस बनना पड़ेगा. सोल कॉन्शियस अर्थात कि मैं जो आत्मा हूँ, जो रूह हूँ, आई एम अ सोल सेपरेट फ्रॉम दिस फिजिकल बॉडी. अपने आत्म स्थिति में जब हम आते हैं और अपने आत्मा के गुणों को जब हम पहचानते हैं, तो हम इन सभी भेदों से ऊपर चले जाते हैं और अपने गुणों के आधार से हम अपने जीवन को भी चलाते हैं और उन्हीं गुणों को हम सामने वाले व्यक्ति में देखते हैं, क्योंकि वो भी एक शुद्ध शांत आत्मा है, वो भी एक ज्योति बिंदु स्वरूप है. जैसे मैं आत्मा लाइट हूँ, वो भी प्रकाश पुंज है. तो इस प्रकार से हमारा जो दृष्टिकोण है, the way my attitude towards everyone, my vision towards my fellow beings changes. जब तक ये चीज नहीं डेवलप होती, तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के भेदभाव में आ जाते हैं. और there is we understand that there is no limit to be unlimited, and also there is no limit to be limited. So we can be as limited in our ways, in our behaviors, in our vision as much as we want, and we can be as unlimited. तो हम एक लेकिन उस धर्म में भी हो सकता है, लेकिन उस धर्म में भी हो सकता है कि कोई प्रकार के भेदभाव हो जाएं. तो बहुत सुंदर तरीका है कि हम सभी इन सभी धर्मों, दैहिक धर्मों से उठकर, अगर हम अपने आप को स्पिरिचुअल एनर्जी समझते हैं, आत्मा समझते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं उस एक परमात्मा की संतान हूँ, और इसके नाते हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, दैहिक किसी भी जगह रहता हो, लेकिन वो मेरा आत्मा रूप में भाई है. और हम यहाँ भाई और बहन के रूप से कार्य कर रहे हैं. तो ये वर्ल्ड फैमिली के रूप में दिखेगा. नॉट जस्ट इंडिया इज माई फैमिली, बट वर्ल्ड इज माई फैमिली, द होल ह्यूमैनिटी. तो ये चीज हम राज्यों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते आ रहे हैं, और हम ये प्रैक्टिस भी करते हैं डेली लाइफ में. ये एम्पावर भी करता है, और ये एक नेचुरल हमारी जो टेंडेंसीज है उसको अपने हमारे जो जिससे अभी एक बात हुई थी कि द नेबर्स हेल्प, तो नेबर्स भी तभी हेल्प करेंगे जब उनकी वो मानसिक स्थिति इतनी शुद्ध हो. तो इस प्रकार से हम इसको डेवलप करें, और सोल कॉन्शियसनेस को अगर हम लेकर आएंगे, तो हम एक प्रकार से एक बहुत सुंदर यूनिटी हर एक धर्म में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा तो एक है. उस एक परमात्मा की हम संतान हैं. आपस में जो हमारा भाईचारा है वो प्रैक्टिकल हो जाएगा.
Om Shanti. Thank you, sister. Thank you for your insights. And सही कहा आपने कि पैंडेमिक जो आया था कोविड, वो किसी धर्म या किसी रिलीजन को देख के नहीं आया था. And it was same for everybody, and the pains and suffer was the same for everybody. And आपने बिल्कुल सही बोला कि हमको जैसे हम अपने दूसरों को अपने आप को देखते हैं, वैसे ही हम दूसरों को भी उसी नजरिए से हमको देखने की आवश्यकता है. Thank you very much for your insights, and I would move forward and now request Mr. Khalid Rashid जी से कि वो अपने वक्तव्य को रखें. I think Mr. Khalid Rashid is not present with us, so I would now request Dr. Narendra Kaur from Anandsheel. She can speak on this question. Okay, so this was something which is again very close to my heart, because being from a Sikh religion, one thing which I always I was told, in fact I read, was that when Guru Nanak Dev Ji achieved enlightenment, the first words which he spoke was, "Na koi Hindu, na koi Mussalman." So he was born at that time when there was a lot of discrimination related to religion, and also discrimination in terms of where the women were not given equality. So not only about the religion, but also about women getting the equality or equal platform was what Guru Nanak Dev Ji gave to us through his preachings. So जब उन्होंने ये बहुत बड़ी बात बोली कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, और उन्होंने कहा एक ओंकार, means God is one. Why don't we all, when we read it, हम अपने डेली लाइफ में पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर भी कई बार हम लोग इस चीज को प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं. सोशल मीडिया एक जैसे कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हेड एंड टेल, इसी तरीके से हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है. सोशल मीडिया ने काफी हद तक अगर हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन दी हैं, तो कई नेगेटिव चीजें भी हम लोगों ने वहां से ग्रास्प की हैं. इसी को ही हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं तब जब आप यहाँ पे रिलीजियस लीडर्स की बात करते हैं. और जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि हमारे रिलीजियस लीडर्स जो होते हैं, दे आर आवर वोकल गुरुज. वो हमारी ही ग्रंथों से, हमारे ग्रंथ साहिब में जो भी लिखा है, हमारे ही गुरुओं द्वारा जो भी प्रीचिंग्स है, उसको आगे फॉरवर्ड लेके आते हैं बिटवीन पीपल. बट वेयर आर वी लैकिंग? अगर ऐसा है हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में, हमारे रिलीजियस बुक्स में, सब जगह एक ही चीज लिखी है, सार एक ही है. The nectar that God is one is mentioned in all the holy books. तो हम उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जिस कलयुग में रहते हैं, well, I am not a spiritual guru, but I am more inclined towards this. But everybody has that hunger for a lot of things. जैसे एक तो सोशल, आपको अपना सोसाइटी में एक अच्छा नाम दिखाना है कि you're a good human being. Then of course money, बहुत सारी चीजें जो मैंने पेंडेमिक के टाइम पे मैंने देखी. अगर मेरे सामने एक सेक्शन ऐसा था जहाँ पे बहुत से लोग मॉर्निंग टिल इवनिंग टिल नाइट लोगों की हेल्प कर रहे थे, वहाँ पे दूसरा सेक्शन ऐसा था जहाँ पे जब मैं इंजेक्शंस के लिए या और बाकी चीज़ों के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए मैं लोगों से कांटेक्ट कर रही थी जिनके पास वो चीज़ें थी, जो 5,000 का अवेलेबल होता था मार्केट में, वो 70,000 का मिल रहा था. और उस समय पे परिवार लोग सिर्फ जान बचाने में लगे हुए थे. तो वो एक मोरालिटी ग्राउंड्स हमारा मिसिंग था. मैंने एक
हॉस्पिटल वाले को बोलते हुए सुना कि मैंने एक किराए पे जगह ली थी और मैंने सोचा था इस किराए मतलब इस जगह को मैं शायद 5-6 महीने में, आई थिंक लीज पे लिया था हॉस्पिटल, शायद 5-6 साल में उसको मैं कवर कर पाता, उसका लीज कवर कर पाता, पर उसने ड्यूरिंग पेंडेमिक विद इन 3 to 4 months उसने पूरा लीज कवर कर दिया। हाउ? So that goes without saying कि उन लोगों ने क्या किया। बट वहीं पे ही बहुत से ऐसे डॉक्टर्स से भी मैं कनेक्शन में आई जो बहुत कुछ कर रहे थे, आउट ऑफ द वे जाके हेल्प कर रहे थे। खैर, कमिंग बैक टू रिलीजियस बिलीव्स, यहाँ पे ये चीजें क्यों डिफ्रेंशिएट हुई, क्यों इतनी चीजें डिफर की लोगों में, हर तरह का, जैसे कहते हैं ना एक एंजल और एक डेविल, तो मैंने दोनों तरह के फेजेस भी देखे। तो हमारे फोकस इस समय मैक्सिमम हमारा ये होना चाहिए रिलीजियस लीडर्स का कि हम सबके अंदर वो एंजलिक फीलिंग डेवलप कराएं। और वो कैसे हो सकता है? हमारे गुरुओं ने इतनी कीमती चीज हम लोग को दी हुई है हमारे रिलीजियस बुक्स के थ्रू, जिसमें हर जगह पे सिर्फ सर्वत्र का भला, सबके लिए अच्छा होना, सबके लिए अच्छा सोचना, वही ही एंड में यही बोला जाता है कि थिंक गुड फॉर ऑल। तो वो प्रीचिंग्स बहुत मिसिंग है। कहीं ना कहीं हमारे रिलीजियस लीडर्स की तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां आ रही हैं, जहाँ पे ये चीजें हम लोग प्रीच नहीं, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। नॉट ओनली रिलीजियस लीडर्स, मैं कहती हूँ इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें आपके डेली लाइफ में आपके फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप जो सीखते हैं आप उसको आगे बढ़ाएं, आगे लोगों में इम्पार्ट करें। सबसे बड़ी चीज होती है जो आजकल हम बच्चों में देख रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन। और वो इसलिए है क्योंकि अचानक से दे ऑल वांट कि सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ परफेक्ट रहे, बट नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज द सेम, एवरीथिंग कीप्स चेंजिंग। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी ये लिखा है, ए मारक संसार को नानक थिर नाही। मतलब this is the way of world of Nanak, nothing is stable or permanent, right? When we know that nothing is stable or permanent, so where are we missing out in making these people aware that nothing is permanent? When a lot of things happen, पीछे भी बहुत पेंडेमिक हुए, कई चीजें हुई, लेकिन हम लोगों ने उससे लड़ा और उसको हम लोगों ने कॉन्कर किया। तो ये कैसे कॉन्कर कर पाए? थ्रू द नॉलेज which we inculcate in ourselves by our religious books or through the people who are aware of it. तो ये सारी चीजें हमें एक, जैसे हम कहते हैं कि हम आगे अपने विरासत में कुछ दे के जा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि हम विरासत में बच्चों के अंदर, यूथ के अंदर ये भी हम ये विरासत में छोड़ के जाएं, उन लोग के अंदर एक अच्छा इंसान बनने का हम एक ये विरासत छोड़ के जाएं, वो एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे मनुष्य बने। क्योंकि जैसा कि सिस्टर ब्रह्म कुमारी जी ने भी बोला था कि यहाँ पे जब पेंडेमिक आया तो किसी ने, पेंडेमिक ने ये नहीं देखा कि वो हिंदू को इफेक्ट कर रहा है, मुस्लिम को इफेक्ट कर रहा है, सिख को इफेक्ट कर रहा है। इट इफेक्टेड ऑल, इट इफेक्टेड एवरीबडी। सो यहाँ पे ये भी चीज समझना जरूरी है कि पॉलिटिशियंस या जो भी अपने मतलब से जो हम लोग में मानवता खत्म कर रहे हैं, हम लोगों में इतना डिस्क्रिमिनेशन ला रहे हैं, उन चीजों को हम ना सुने। ये हमारा इंसाइट होना चाहिए, हमारी खुद की एक नॉलेज जो हमें समझ होनी चाहिए, वो हमारी समझ कैसे डेवलप होगी? अगेन एज आई सेड, थ्रू दीज गुरुज, through the gurus, religious gurus, or through spiritualism. Yes, that plays a very important role in our life. So thank you. Thank you, Dr. Kaur. Thank you very much for your insight. Rightly, Guru Nanak Dev ji ने बहुत सही बात बोली है कि God is one, and the social media has both his positives and negative aspect, and faith leaders plays a very important role here in this. And we should always look back upon what the scripture says, and always seek to our gurus what they preach and what they are teaching. And rightly said that the youth are very anxious these days, and it's very important that we
give them an inheritance of good values that comes from the our scriptures. Again, I say that it's going back again to our scriptures. Thank you, Dr. Kaur. Thank you for your insight. And now I would move further and request Mr. Arvind Raj जी से कि वो अपने विचार को व्यक्त करें. थैंक यू सर अगेन. इस सेशन में जैसा कि कहा गया था कि हम लोग थोड़ा सा एडवाइस क्या देना चाहेंगे इस इमरजेंसी में, खास करके जब इमरजेंसी आती है तो. सर जैसा कि मैडम अभी कह रही थी कि जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर हैं उसमें सब में अच्छी अच्छी बातें हैं. मैं एक कोट जरा सा करना चाहूँगा. मैं बुद्धिज्म का टीचर हूँ, इसलिए बुद्धिज्म का एक कोट करना हम मुनासिब समझते हैं. धम्पद एक किताब है बुद्धिज्म का, जैसे जिस तरह से गीता है उसी तरह से बुद्धिस्टों का एक काफी इम्पोर्टेंट किताब है धम्पद. उसमें एक वर्ष है, न ही वेरेन वेरानी संबंधिता कुदाचन अवेरेन ही समन्ति एस धम्मो सनातन. वो कहते हैं कि दुश्मनी कभी शांत नहीं होती है. दुश्मनी शांत करना हो तो मोहब्बत का एक पैगाम भेजना ही होगा, और यही सनातन धर्म है. सनातन धर्म किसी एक धर्म को हम नहीं कहेंगे. सनातन धर्म मतलब जो सदा चलने वाला धर्म है. कोई रिलीजन ये नहीं है, बल्कि एक धर्म है. धर्म ही है. धर्म को रिलीजन ही नहीं कह सकते हैं, धर्म है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है कि आपको नफरत भी दूर करनी हो तो मोहब्बत का पैगाम लानी होगी. लेकिन फिर भी हम नहीं मानते हैं. इसके पीछे जैसा कि मैडम भी कह रही थी, और ये हम लोग अपने जब क्लासरूम में बच्चे पूछते हैं या फिर बच्चों को संदेश देना होता है, तो हम इसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर से दूर क्यों हो गए हैं, और या फिर दूर नहीं हुए तो उसको हम मानते क्यों नहीं हैं, या फिर जितनी गहराई से पहले मानते थे अब नहीं मानते हैं. कुछ तो जो ग्लोबल विलेज का जो चीज़ें आई हैं, जैसे कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट भी लोगों की बढ़ी है, कुछ सोशल मीडिया ने भी उनको ऐसा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है. ये तो हो सकता है, लेकिन जो रिलीजियस स्क्रिप्चर में सही बातें हैं वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं. या तो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ने के एक तो ऐसे जनरल चीजें भी पढ़ने के लिए लोग नहीं चाहते हैं, तो रिलीजियस बुक कौन कोई पढ़ना चाहेगा. हमारा ये फर्ज बनता है, एडवाइस के रूप में हम ये कहना चाहते हैं कि रिलीजियस लीडर हों या टीचर हों या मीडिया के लोग हों या एनजीओ के लोग हों, कुछ इस तरह से रिलीजियस प्रोग्राम रखें ताकि जो स्क्रिप्चर में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो लोगों के सामने आए और उसको अपना सकें. वो डिस्टेंस बना लेते हैं कि रिलीजियस का पढ़ेंगे तो हम अपने कंपटीशन में पीछे पड़ जाएंगे. ऐसा नहीं है. इस तरह के भ्रम को दूर करें. अब जैसे फिर इसी तरह की बात है कि हेलो जी अरविंद जी, आप कंटिन्यू करिए. जी. इसी तरह की एक बात और होती है कि जो हम इंटरफेथ डायलॉग की बात कर रहे थे, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो दूसरे रिलीजन के बोल रहे हैं उसको हम एकदम काट देते हैं, नकार देते हैं किसी सिरे से. जैनिज्म का एक बहुत अच्छा सिद्धांत है, शायद आप जानते होंगे, अनेकांतवाद. अनेकांतवाद में एक कहते हैं कि सबके अपने अपने व्यू होते हैं, अपने अपने व्यू हो सकते हैं. किसी को हम सही या किसी को हम गलत नहीं कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाते हैं कि एक अंधा व्यक्ति को यदि किसी हाथी के सामने खड़ा कर दिया जाए तो वो क्या बताएगा हाथी के बारे में. वो सबसे पहले उसके पैर को पकड़ेगा तो कहेगा हाथी खंभ की तरह है, सूंड को पकड़ेगा तो कहेगा सब की तरह है, और कान को पकड़ेगा तो कहेगा सुख की तरह है. लेकिन अब यहाँ पर देखें कि कोई
इसमें से कोई असत्य, कोई पूरी तरह सत्य नहीं है, कोई झूठ भी नहीं है। कम की तरह उसके फील हुआ तो कम की तरह, तो सत्य तक पहुंचने के जो अनेक लोगों के अलग अलग राहें हैं, उसको हमको एक्सेप्ट करना होगा कि उसकी राह है ना, उसमें हमको कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा जो पैंडेमिक आता है या कोई तरह का, जब हम लोग देखते हैं पोस्ट में हो या पहले, तब हमको एडवाइस करते हैं, जैसे ये कह सकते हैं कि भाई आप प्रार्थना करने के लिए कहीं मंदिर मस्जिद कहीं नहीं जाएं, अपने घर में कर लें, क्योंकि प्रार्थना तो अपने दिल की चीज होती है। ऐसे मौके हैं, जब इस तरह के मौके हैं तो इस तरह के मौके में हम इसको अवॉइड करें कि बाहर न जाएं, अपने घर में पढ़ लें। और अब जब बाहर निकलना ही पड़े, कोई जरूरी है, तो हम हमेशा अपने जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से चलें, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे खास करके कोरोना के केस में था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क प्रॉपर लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। इस तरह के एडवाइस हम लोगों को देना चाहिए और देते रहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर अरविंद, थैंक यू वेरी मच। आपने सही कहा कि जितने भी हमारे धर्म हैं, जितने भी हमारे रिलीजन्स हैं, वो सभी अच्छी बातें हमें बताते हैं, सभी अच्छी बातें सिखाते हैं। और जैसे कि आपने धम्मपद ग्रंथ से आपने बोला कि एनिमिटी कैन नॉट बी एंडेड थ्रू एनिमिटी बट कैन बी ओनली एंडेड बाय लव। सचमुच में हम अपने दुश्मन को भी हमको अपने उस प्रेम से जीतने की आवश्यकता है। और जो आपने ग्लोबल विलेज की बात करी, वो सचमुच में जो सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आया है कि जो आजकल के यूथ जो है वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, परंतु ये बहुत अनिवार्य है कि हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को हम रखें कि वो इन बातों को सीख सके कि जो रिलीजियस ग्रंथ है, हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, वो क्या बात है बताती है, उसके बारे में का अवेयरनेस होना जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर अरविंद। अब मैं आगे बढ़ूंगा और मैं आगे फॉरवर्ड जाऊंगा, अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर जाना चाहूंगा। द थर्ड क्वेश्चन इज promoting leadership qualities of the responders and service providers and building capacity in psychosocial care and support gender-based violence, promoting resilience in the community। और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, इस क्वेश्चन पे बात करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा फादर आनंद मैथ्यू जी को। ही कैन कम एंड स्पीक ऑन दिस क्वेश्चन। डॉक्टर फादर Arvind Matthew. Yeah, did I hear you saying preparing people for volunteers to be ready? I'll repeat the question. Yeah. I'll repeat the question. Promoting leadership qualities of the responders and service providers and building capacity in a psychosocial care and support gender-based violence, promoting resilience in the community. Yeah, I I grasp the question. So promoting leadership qualities, it's an ongoing process. We need to continue that by initiating contacts with the people, then organizing them, and regular training, especially targeting the young people who have leadership qualities, basically innate qualities within them, and those who are interested. And that has to be multi-pronged. One thing is leadership qualities in itself, then various techniques of disaster management, counseling, then awareness programs on gender justice, very especially these days in places like Uttar Pradesh, we find there's a lot of eve teasing, जो गांव आसपास और चूंकि हमारा समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष वर्ग यहाँ तक स्कूल के बच्चे भी लड़कियों को एक निम्न दृष्टि से देखते हैं, and
the adults to see women as objects of misuse, objects to be exploited. So we need to train people regularly, give awareness. No, that is not fitting to the civilized society. So to respect women, to respect children, and also to educate children, to respect elders, जो बूढ़े लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं समाज में, परिवारों में, उनके सही ढंग की देखभाल, इस सब के बारे में लगातार लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है. बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स, सेमिनार्स वगैरह और एक्सपोजर प्रोग्राम देने की जरूरत है. So it has to be an ongoing process with multi-pronged approach using various styles of communication. We are doing through theater, through street plays, through songs, through stage dramas, and also through rallies and then discussions and public meetings. And in the schools, classroom, especially colleges, many seminars are being organized in this way. And in the present time, things like consumer rights, and then women's rights, child rights, and especially where there is too much of police control of that, human rights or the rights assured by our constitution and by law to protect ourselves. So these are more and more what you call free legal aid, legal camps, all these are to be organized. So leadership, quality leadership has to be emerged, has to be promoted through a multi-pronged approach. That's what I would like to share. May I know how long this meeting will go? Can anyone answer? Until the... Yes, sir. Supposed to be actually. Yes, Asking till what Urvashi. time? Yeah, I said according to the agenda, it is up to 5. But we'll have to ask Altamash. Yeah, actually, sir, we'll have to finish before 5. We are actually slipping out of the time. But I'll request remaining speakers to kindly sum up their responses as soon as possible. Mr. Sandeep, if you're there. Sandeep seems to be out. Some Altamash, you can take over till he returns. Sure. So now I request other speakers to kindly share their responses on this third question, especially in context of psychosocial support and the CEFM and all. What responses, I mean, you can share? So probably I'll just share. So अभी तक जो हम resilience की जो हम बात कर रहे हैं या जो leadership की भी बात कही, community support की बात कही, I would just like to mention that whenever we are dealing with any disaster or anything, our focus is on getting things, being ready physically, stocking up things, being ready with us with a skill set, doing our drills, etc. But हम अपना स्टॉक तो करते हैं, सब कुछ स्टॉक करते हैं, बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करते हैं बहुत प्रकार से, लेकिन जैसे जो फेस करेगा उस सिचुएशन को, दैट इज मी, द इनर बीइंग, और उसके ऊपर जितना हमें फोकस करना चाहिए
उतना हम नहीं करते हैं। हमारा जो फोकस रहता है प्रिपेयर्डनेस के लिए वो बाहर रहता है, हम बाहर से क्या कुछ करें। और जब कोई सिचुएशन आती है देन अगर आपके पास सारे सुविधाएं हैं भी, फैसिलिटीज हैं भी, लेकिन जो पैनिक होता है वो आपको यूज नहीं करने देता उन चीजों को प्रॉपरली। और अगर आप अंदर से स्टेबल हैं, डिस्टर्ब नहीं होते, तो आप किसी ऐसी सिचुएशन में, आपदा में भी राइट सोल्यूशन, राइट अप्रोच ले सकते हैं। सो वेरी वैलिड टू बिल्ड अप दैट रेजिलियंस एंड दैट इनर क्लैरिटी। तो इसके लिए हम राजयोग में, स्पेशली जो मेडिटेशन हम ब्रह्मा कुमारीज में प्रैक्टिस करते हैं, विच इज कंसिडरिंग द सेल्फ एज अ सोल एंड कनेक्टिंग आवर माइंड विद द सुप्रीम सोल। और हम जब अपना डेली रूटीन बनाएं, जो हम बताते भी हैं सभी को कि ऑफ कोर्स हम अपनी जॉब भी करेंगे, घर का भी अपने घर का भी कार्य करेंगे, जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको भी करते हैं। तो हम सारा दिन अपनी एक दिनचर्या बनाते हैं, लेकिन अपनी मनचर्या नहीं बनाते। दैट मीन्स वी नो व्हाट आई नीड टू डू from this time to this time. For example, you had this meeting and then you'll have something else. We are conscious of the time that about the meeting is about to end and this is what I need to do. But what about how I need to be? What is it that I need to think? What are those feelings that I need to basically develop and cultivate within me, and which is very important, because we become a human doing and we're not being, we are human beings. तो अगर हम अपनी मनचर्या भी बनाते हैं कि मुझे अपने मन में किन थॉट्स को रखना है, किस प्रकार से अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, जिसके लिए हम ये भी देखें कि किस प्रकार का इनपुट हम देते हैं अपने माइंड को, विच इज इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, द न्यूज। और यहाँ पर आपके जो भी आप, चाहे आप कोई रिलीजन, जिस फेथ को भी फॉलो करते हैं, आप उसे, उसके स्क्रिप्चर्स या उस पॉजिटिविटी को भी अपने सुबह सुबह अगर आप लेते हैं, साइलेंस को इंक्लूड करते हैं, और अपने माइंड के लिए और अपनी आत्मा के लिए भी, जिस प्रकार से आप बाहर ये चीज से अपने आप को ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो रेजिलियंस है दैट इज विद इन द सोल. So I think that needs to be focused on and really understood. If you really want any sort of this leadership to come up, or locally we can manage disasters or anything which happens in the future or the present in a more positive way. So thank you so much, and thank you once again for inviting me to this panel discussion. Thank you, ma'am. Now I request नरेंद्र कौर जी, आप अपना रिस्पॉन्स इसको लेकर प्लीज शेयर करें. Okay, so related to the third question, what we missed out, in fact, in the COVID pandemic. Am I audible? Yeah, you're audible, ma'am. But the third question is basically how we can promote leadership qualities of the founders. Yeah, I know. I was coming to that. Sure. So what I was talking about was that ये अभी जब ये जो थर्ड वेव आया था, उस टाइम पे जब लोग घर पे थे, लॉकडाउन हुआ था, तब सबको ये भी पता है कि उस समय पे काम नहीं था. पीपल वर, मोस्ट ऑफ देम वर लाइक आउट ऑफ वर्क, दे वर नॉट अर्निंग. और उसका इफेक्ट किस पे पड़ा? सबसे बड़ी चीज है खाने पे, भूख. यू नो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ. अगर हमें खाना नहीं मिलता तो भूख हमसे क्या करवा लेती है, ये आप कभी खुद भूखे रह के देखें तो पता चलेगा. तो उस समय पे क्या हुआ, मैंने ऐसे भी सिचुएशंस देखी थी. रिसेंटली मैं एक रिक्शे वाले से मिली, उसके पास 2 बच्चे उसने रिक्शे पे बैठाए हुए थे अपने. मैंने कहा कि अच्छा, उसको आई स्टार्टेड गिविंग दैट चाइल्ड सम फूड. मैं उसको कुछ खाना मांग रहे थे, उन लोगों को खाना दिया. तो उतनी देर में वो रिक्शा वाला कहता है इनका तीसरा भाई था, वो किसी ने किडनैप कर लिया. एट द टाइम जब पेंडेमिक था, उस टाइम पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत हाई पे थी. चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाज वन सोर्स ऑफ, वन मीडियम ऑफ अर्निंग मनी. Another thing was about gender, this domestic violence. Domestic violence जहाँ घर पे husband wives में बहुत झगड़े हुए हैं और बहुत सी चीज़ें हुई जिसकी वजह से divorce में matters भी increase हुए हैं.
तो यहाँ पे जब आप लीडरशिप क्वालिटी की बात कर रहे हैं एंड अबाउट जेंडर की भी बात कर रहे हैं, सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को लाई क्योंकि यहाँ what was missing was the empathy. And when we talk about being a good leader, one of the leadership quality involves empathy, being empathetic. So that was missing. Now, who will play this major role in it? It's the NGOs, the social workers, and of course, जो हम सबका ही रोल बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मिसिंग था. क्यों था? क्योंकि वहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म या ह्यूमैनिटी वाज आल्सो मिसिंग. अगर हमें सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था तो हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग में क्यों आए? क्या यही एक सोर्स ऑफ इनकम था? इस चीज को क्यों नहीं रियलाइज किया गया कि वहाँ पे बच्चे भी अपने पेरेंट्स से दूर हो गए हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस इतना हुआ. जब मैंने बोला कि गुरु नानक देव जी ने वहाँ पे, अब जब नॉट ओनली रिलीजन, मतलब नॉट ओनली उन्होंने ये बोला कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, बल्कि उन्होंने महिलाओं को भी एक इक्वल प्लेटफॉर्म दिया. जो डिस्क्रिमिनेट होती थी महिलाएं, उनको भी एक इक्वल प्लेटफॉर्म दिया. आई थिंक एवरी रिलीजन स्पीक्स अबाउट वर्शिपिंग विमेन, राइट? सो यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस क्यों आता है ना? क्यों ये रहा कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े घर में हुए और महिलाओं को बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखा गया? तो ये सारी अपने आप में एक सवाल हैं जो हम सबको खुद से जवाब ढूंढने हैं. फिलहाल तो यही है कि जो मिसिंग है वो है एम्पैथी. और वो कैसे आएगी? वो हमारी, अगेन कमिंग बैक टू द सेम, हमारे लीडर्स जो हैं, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हों, जो भी हो हमारी सोसाइटी में, जो इन चीज़ों को लोगों में इनकलकेट कर सकते हैं, वो करें. वो बहुत ज़रूरी है थ्रू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी. एंड ऑल्सो it should be, whatever we preach, it should be practiced. So we have to make sure of that. We have to be sure of that कि हम कैसे उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. हम लोग एक जीवन जी रहे हैं, उस जीवन को अच्छा सफल बना के जाएं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज व्हाट ऑल आई वांट टू से. Thank you, Dr. Kaur. Thank you for your insight, where faith leaders have a very important role in playing their role in building the leadership in the communities. Thank you for your insight. Now I would request Arvind Raj ji कि वो अपने वक्तव्य को व्यक्त करें. थैंक यू सर. हम बहुत शॉर्ट में, टाइम ओवर हो रहा है, बहुत शॉर्ट में हम अपने पॉइंट में ही बात रखना चाहेंगे कि जो लीडरशिप प्रमोट करने की बात, क्वालिटी करने की बात की, उसमें से सबसे पहला पॉइंट हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें यूथ को सबसे ज़्यादा जोड़ना चाहिए किसी न किसी रूप से. जैसे हो, उनको जॉब के बहाने, जिस बहाने हो, उसको जोड़ना पड़ेगा. दूसरा, हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हम लोग को रिलीजन को पॉलिटिक्स के मकड़ जाल से थोड़ा सा डिस्टेंस, कैसे होगा हमें पता नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ना चाहिए. क्योंकि अभी आप देखो, इतने टेंशन है, इतने सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक कोई कांग्रेस, इसमें रिलीजन पर कोई कांग्रेस नहीं हो रही, कोई कॉन्फ्रेंस अच्छा नहीं हो रहा है जिसमें सारे रिलीजन के लोग आए. सरकार अभी चाहे तो तुरंत वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस करा दे. तो एकदम हम सरकार की ओर एकदम झुके हुए हैं, एकदम सरकार के इशारों पर चलते हैं. सरकार के अपने प्लस माइनस परम्यूटेशन कम्बिनेशन होते हैं, इसलिए वो अपने हिसाब से रिलीजन को तोड़ मोड़ कर लेते हैं. इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस, लीडरशिप तभी अच्छा लीडरशिप उभर के आएगा जब हम थोड़ा सा रिलीजन को पॉलिटिक्स से दूर करेंगे. तीसरी बात ये हम करना चाहते हैं कि जो लीडरशिप प्रमोट करने के लिए जरूरी है कि हम समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते रहें. वर्ल्ड में बहुत अभी ऐसे लोग हैं जो ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन वो कहीं छिप के बैठे हैं, कहीं उनको मौका नहीं मिलता है, कहीं उनका गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं. तो ऐसे लोगों को भी उभर कर सामने आना चाहिए, लाना चाहिए, ताकि वो ट्रेनिंग अच्छा लोगों को दे सके. बस. थैंक यू सर. थैंक यू डॉक्टर अरविंद फॉर योर इनसाइट. सचमुच में हमें पॉलिटिक्स, रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करने की आवश्यकता है. थैंक यू. और यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन आंसर को समाप्त करते हैं. एंड मैं अगर इसको समाप्त करना चाहूँगा तो अगर हम शुरुआत से हम देखते हैं कि उर्वशी जी ने किस प्रकार से हमें बताया कि डिजास्टर को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे हमें उसको
रिस्पॉन्स करना चाहिए एंड कैसे उसकी रिकवरी करना चाहिए। और बहुत ज़रूरी है कि पीपल who need help and people who can help both are important, and the interfaith community can bring a large change in the community. And हमने सुना बहन बीके हुसैन जी से कि कैसे हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमें यूटिलाइज करना चाहिए और कैसे स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना चाहिए, एक्शन में लेके आना चाहिए। एंड हमने देखा कि कैसे हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कैसे हम लीडरशिप बिल्ड कर सकते हैं इन द कम्युनिटी, एंड कैसे हम अपने फॉलोअर्स को हम कैसे उनके साथ हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नंदा ने, डॉक्टर कौर ने बिल्कुल सही बोला कि वी शुड ऑलवेज बी गोइंग बैक टू आवर स्क्रिप्चर, व्हाट द स्क्रिप्चर सेज एंड व्हाट द रिलीजियस एंड व्हाट द गुरुस टीच। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि हम जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स अच्छी बातें बताती है, उनके बारे में हम अपने यूथ को, जो आने वाली जनरेशन है, उसको आगे हमें उसको इनकलकेट करने की आवश्यकता है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, पॉलिटिक्स, रिलीजन को पॉलिटिक्स से हमें दूर रखने की आवश्यकता है। तो समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। एंड ओवर टू आतमश जी for further proceeding. Thank you, sir. Thank you so much, and thank you all the speakers and panelists. I'd request Arvind to kindly share the vote of thanks, and we'll conclude the session for today. Yeah. Good evening, everyone. I would like to give special thanks to Mr. Sandeep Singh from World Vision India and Ms. Urvashi Chandra from UNICEF, and all the faith-based leaders and motivational speakers. And the way you have presented is very attractive and commendable. Today we are fortunate to have the knowledge-sharing experts and honorable speakers from different faith-based religious organizations. Your amazing experiences and insightful sharings have really inspired us and are indeed a booster for all our future endeavors. And I also like the PPT which has prepared by Ms. Urvashi Chandra from UNICEF. Thank you so much, ma'am, for your valuable participation, suggestion, and guidance to make this meeting successful. And thank you so much all other participants for joining with us. Thank you, Arvind, and thank you all the participants again. Thank you, Urvashi ma'am, Sandeep ji, our eminent panelists, and all our colleagues from Sphere India also, Mansi and Divya and Nitesh. Thank you so much, and we are looking forward to meeting again. And we are holding these sessions in different states, and next we'll be having the IFHA session in Bihar also. So I request you also if you could also join for the rest of the sessions. So for now, we will conclude this session for today. Thank you so much again. Thank you, Atamash. Thank you, Mansi. Thank you all the participants. Thank you very much. Thank you.